Good morning, friends. Friends, today only we have discussed. Today we are going to learn the topic postal services. We know that the postal services is known as the backbone of Indian services because it's very much important. It's very much important for our daily communication and for daily information. Even in the small villages, we have the post office. Even the banks cannot reach there, but the post office can reach there. That means it gives every services related to saving, related to postal service, related to courier service, and everything. Small saving plan, life insurance. What the bank does, the same functions is also done by the postal service, right? It is not known by the people. It's more like in India, in more than 2 lakhs post office is there, right? It's really unimaginable figure. More than 2 lakhs post office is there. In textbook it has been given 1,50,000, but it is increasing day by day. Now it's more than 2 lakhs post office in our India, and they operates in a very well way, right? Let's see the topic, friends. Postal services. So friends, today's topic that we are discussing is regarding the postal services. So let's see. Postal service plays an important role in the return information. You know that in earlier days, there was no other medium. There was only one medium to give the information and the communication. That is the postal services. Inland letters. If you remember, your parents may remember the word inland letters. In that, one type of blue color paper was there. In that, we have to put the stamps and all, and then we can write. Today the communication has been increased in a very speedy way with the help of mail services, right? Today we are using WhatsApps and all. So today the little bit what we say, the postal service has come down, but other services are also there. Let's discuss that. So postal service plays a very important role in the return information and communication. We know communication means what? Communication means to provide the information to the others. That is known as communication. It is essential to pass on information from one place to another speedily and without interpretation. Right. In earlier days, there was no other option. The most speediest way is the postal service. The same service can be available through private postal service, that is courier service or Angadiya. The word, if you remember, Angadiya means what? When we have to pass some important documents or some precious metal like diamonds and golds. So what happens? Such type of persons are appointed, and they take the responsibility to give that product to the particular party on the particular place. Okay, the same service to individuals and business unit. The Indian Postal Department has been providing information and communication services. It's very important for you. The Indian Postal Department, it's a big one. Indian Postal Department has been providing information and communication services for more than 150 years. It's remarkable achievement. More than 150 years means it's a what we say, right? Because after the independence we have gets in 19, you know that 1948 we get the 1950, right? So 70 years we have passed. Before that also the postal department was there. Postal department is providing services other than just postal services, like this was the main money order. We can transfer in that time also, we can transfer the money order, acceptance of various forms of deposit. Today also post office is very much active in giving the forms of deposit through small saving plans, postal life insurance and rural insurance scheme. Rural means gav area. Right. In village area, we know that there is lack of accessibility of the banks and all. Banks are not interested to go in the village area. So postal service is that department. They take the responsibility and do everything for the public. So let's see, friends. It also provide other investment service like mutual fund. So today we know that the mutual funds are very much right organized sector. So even the postal service are also doing that sector, and service of agent on the behalf of government of India for many schemes. Now agents are there in order to make the schemes more comfortable to the public. It also provides service of paying retirement pension also. The people can take the pension also,
from the postal services. It has got license to provide banking service, and hence it acts as a bank to the customer. Yes, it acts as a bank. There are more than that, I said to you, there are more than 1,50,000 post office in India. Just 1 minute. There are more than 1,50,000. I already said to you that is increased to 22 lakhs now. Out of it, almost 90% are set up in rural areas, because the rural people are more connected to the postal service. In urban areas, the people want little bit speedy work. So obviously, we and you will go to the bank for the everything. But in the postal, in the rural area, the people are not aware of banks, and banks are also not interested in going to rural areas. So postal service department gives everything. It provides the following services. So let's see what are the services. Ready, friends? The first service is general post and letters. Now, what is that? General post and letters means nothing. The letters, cover, inland and all. Information and communication can be sent through postcards. We know that postcards are there, inland letters are there, and covers are there. So it's very normal one. So first, there is no need to explanation also. It's very easy for you. So what we can say, general post letters. So what we can say, general post letters. Information and communication can be sent through, which are the mediums? Information and communication can be sent through, which are the mediums? Mediums are postcards. Number 2 is inland letters. And number 3 is covers. Okay, covers, right? You know, covers means covers के अंदर रख के उसके ऊपर stamp we can put and then we can go. Registered post. Even today also, when the government department ask any interviews in railway, in banks, interviews are there, or the written examinations are there, they says that you have to make a registered post. Registered post means nothing. We have to register in the post. That means whenever the other party receives that post, he has to sign on it. So it becomes an acknowledgement that the party has received that particular post. It will be little bit costly as compared to inland letters. So let's see that. Registered post. The second is registered post. So let's see this one. Postal department provides service of registered post, like the courier services, premium service we can say. Postal department provides services of registered post. Such posts are delivered by the, what they want to say, such posts are delivered by the postal department. Such posts are delivered by the postal department, for which the charges are more than the general postal communication. That only I said, it's a premium. It's a premium services given by the post office. It's a premium service. So obviously the charge will be more as compared to the inland cover and postcards. If the sender of the post, what they want to say, if the sender of the post requires a proof in the form of a signature of the receiver, what happens? Just 1 minute. Yes, what they want to say, if a sender means the person who is sending, if a sender of the post requires what? A proof in the form of signature of the receiver, what is done? An acknowledgement is signed on that, and that is to be received by me if I send, and for that some extra charges will have to be paid. Now what they want to say, with the registered post, I put an acknowledgement, and that acknowledgement is to be signed, and that acknowledgement again received by me. So it indicates that my registered post has received the particular place in a proper way. So clear, friends? So we have learned two things. One is the general post services, and number 2 is registered post. In general post, which are the three items are there? Postcards are there, inland letters are there, and covers are there. While in registered post, we know it's a premium services. The amount which is paid for the registered post is more as compared to the postcard, letters, and cover. If a person requires an acknowledgement, he has to pay some extra money, and that circumstances he get that acknowledgement. Okay, so let's see next one.
Now comes parcel services. Now this is totally what we say, each and everyone knows about this one, parcel services. Even if you see a television, anything in the Facebook or WhatsApp, right? What happens? We come to any website that we will provide this parcel to you at this cost and all. After seeing that material, we order it and we get with the help of courier services. Even the postal service also do this, that is the parcel services. Let's see. All products other than those prohibited by the law can be sent in the form of parcel from one place to the another. Right? If I want to send one particular product to other place, I can do that. Even even I can send my vehicle through postal services. Even I can send my vehicle through postal services with the help of railway. They give the function. All products, what they want to say, all products other than prohibited by the law can be sent in the form of parcel from one place to the other. If needed, insurance is also taken for the parcel too. So we have learned insurance. So friends, what are the main principles of insurance? I hope you remember. First one, which is the first one? Principle of utmost good faith. Number two, principle of indemnity. Number three, principle of insurable interest. Number four, principle of subrogation. Clear? So insurance can be taken for the parcel too. Booking for the parcel. Booking of the parcel can be done from any post office. Generally, the sender of the parcel pays fees to the post office. Right? We know that at the time of, even at the time of what we say, the mangoes time, mango season, the people are sending parcel of mangoes to the other, to their relatives and friends and all, with the help of this only. So what we can say, friend, parcel service. All products other than the prohibited by the law, all the products other than the prohibited by the law can be sent in the form of parcel, can be sent in the form of parcel from one place to the other. If needed, insurance can be taken for the parcel too. Booking of the parcel can be done from any post office. Booking of the parcel can be done from any post office. Generally, the sender of the parcel pay fees to the post office because sender only has to send, that's it. So 3 points we have learned. The first is the general post and letters. Number two services is the registered post. And number three is the parcel, that is for the goods. Now comes VPP. Have you ever heard this word VPP? Value payable post. That only I said value payable post means I can purchase any product from anywhere in the world and I can pay the money as per my convenience. That is value payable at post. When my goods are delivered, at that time I can pay. So let's see that. Value payable post. Imperial services VPP is more popular. Any producer or seller or receiving an order for a product sends a parcel through the postal department and the receiver of the parcel pays the parcel charges and also the price which is pre-decided to the postal department, which in turn passed on to the sender. You are getting? If you remember, you have, if you go to Snapdeal, Flipkart or Amazon, you can see one word, cash on delivery. So what happens there? Cash on delivery means when you get the goods, at that time you have to give the price. Okay. Plus the delivery charges, that is in the courier service. Here in the postal service also, they are doing such services also. So how they do that? It's very simple. If I like one particular product, I give the order and the sender of the product contact the postal department and he send the product to me along with the delivery charges. I have to pay the delivery charges to the postman, and that postman will deposit the money in the post office. And the post office collects their delivery charges, and remaining money is given to the sender of the products. Clear? So, what they want to say? Imperial service, any producer or seller, clear,
Any producer or seller on receiving an order for a product sends a parcel. Sorry. A producer or a seller of receiving an order for a product sends a parcel through the postal department, and the receiver of the product parcel pays the parcel charges and the receiver, and also the price which is pre-decided to the postal department, which in turn passed to the sender, which is turn passed to the sender. Clear? So that is, friends, value payable by post, right? So friends, the topics that we have learned, four topics. The first is the general post services. Number two is registered post. Number three is the parcel services. And number four is value payable post. Now comes the topic speed post. Now what is speed post? The name itself says the speed post. Speed means if I send today, tomorrow it will be received by the receiver. That is the speed post, right? It will go by the help of express railways and all, but the cost is more. Now take the example, speed post. If anything urgently I have to send, for example, tomorrow only I have to send one particular letter and all. So it's very much necessary that I have to go to speed post, and it is not available in every post office, right? In Surat, we have to go to Nanpura, the main post office, right? The postal department guarantees, देखो word, the postal department guarantees to deliver the post or parcel within a stipulated time within the place decided in India. इंडिया के लिए, क्योंकि बाकी जगह पे तो पोस्टल सर्विस हम दे नहीं सकते बाहर के देश में. विद इन द प्लेस डिसाइडेड इन इंडिया, the charges are higher. Obviously the charges are higher for speed post parcel than a general post or parcel. It can be insured if required. Insurance भी हम ले सकते हैं. So friends, what is speed post? The postal department guarantees, क्या लिखा है? The postal department guarantees to deliver the post or parcel within a stipulated time and within the place decided in India. The charges are higher. बहुत simple. तो friends, चार main point पढ़े हमने, right? चार मेन पॉइंट पढ़े. एक तो जनरल पोस्ट, सेकेंड रजिस्टर्ड पोस्ट, थर्ड पार्सल सर्विस, उसके अंदर वीपीपी पैसे आप उसमें दे सकते हो, एंड द फोर्थ इज स्पीड पोस्ट. एक बार रीड कर लो. आई एम गिविंग 1 minute टू यू. जनरल पोस्ट, कितने पोस्ट ऑफिस है इंडिया में टोटल? 2 लाख से भी ज्यादा, बराबर. कितने साल हो गए एस्टैब्लिश होके? बोलो. 150 years. जनरल पोस्ट में कौन सी चीज आती है? कवर, इंडियन लेटर्स, और कौन सा है? पोस्ट कार्ड. रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट मिलता है. पार्सल सर्विस में पेमेंट कैसे कर सकते हैं आप? वीपीपी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीपी? वैल्यू पेएबल एट पोस्ट, है ना. स्पीड पोस्ट, स्टिपुलेटेड टाइम, पैसे ज्यादा लगते, द कॉस्ट इज मोर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्स द टॉपिक एक्सप्रेस पार्सल. देखो अब वर्ड आ गया एक्सप्रेस पार्सल. जैसे हमने बोला रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, वैसे ही एक दूसरा वर्ड आ गया एक्सप्रेस पार्सल. कोई चीज ऐसे होते हैं जो, जैसे कि मेडिसिन होते हैं, पेरिशेबल गुड, जैसे कि मैंने बोला मैंगोस होते हैं, तो वो सब चीज हम ज्यादा लेट करेंगे तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है. इट विल बिकम वेस्ट. तो क्या होता है कि हमें उसे जल्दी पहुंचाना पड़ता है, इसलिए बोला है सर्विस एक्सप्रेस पार्सल. देखो क्या लिखा है. दिस सर्विस इज अवेलेबल फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड बिजनेस. सबके लिए, मेरे लिए भी अवेलेबल है और बिजनेस यूनिट के लिए भी अवेलेबल है. एक्सप्रेस पार्सल इज सेंड वेरी स्पीडली, बहुत जल्दी, विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट. टाइम लिमिट के अंदर ये पहुंचता है. पोस्टल डिपार्टमेंट सेंड आइदर थ्रू एयर. देखो एयर
और थ्रू एनी अदर फास्ट रूट, उनकी जवाबदारी हो जाती है. द फीस फॉर दिस इवन हायर देन द स्पीड पोस्ट. एक्सप्रेस पार्सल का रेट जो है स्पीड पोस्ट से भी क्या होता है, ज्यादा होता है. देखो, फीस फॉर दिस इवन हायर देन द स्पीड पोस्ट से भी ज्यादा. तो व्हाट इज फ्रेंड एक्सप्रेस पार्सल? दिस सर्विस इज अवेलेबल फॉर बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज द बिजनेस यूनिट. एक्सप्रेस पार्सल इज स्पेंड वेरी स्पीडली, बहुत जल्दी जाता है, विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट. Postal department send their service through air और through any other fast route और कोई रूट से. The fees for this, जो फीस जो होता है इसका, even higher than the speed post. अब ये सब फ्रेंड्स हमने सब पढ़ा. अब क्या क्या सर्विस देते हैं उसमें हमने पढ़ा. एक तो पहला कौन सा पढ़ा, जनरल पोस्ट का पढ़ा हमने, जनरल पोस्ट. दूसरा हमने पढ़ा रजिस्टर्ड पोस्ट. तीसरा हमने पढ़ा पार्सल सर्विस, उसके अंदर वीपीपी. और उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड पोस्ट. और उसके बाद हमने पढ़ा एक्सप्रेस पार्सल. ये सब क्या था हमें, इफ आई वांट टू सेंड सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, राइट, if I want to receive some particular products, services, letters and all. Now how the postal department act as a bank. कैसे postal department बैंक कैसे काम करती है. देखो, बैंक में आप पैसे जमा करते हो, पोस्ट ऑफिस में भी हम पैसा जमा कर सकते हैं. बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, यहाँ पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. यू कैन विड्रॉ द मनी, यहाँ पे भी आप पैसे निकाल सकते हो. आप लोन लेते हो बैंक से, यहाँ पे भी आप लोन ले सकते हो. यानी हर चीज जो हम बैंक में कर सकते हैं, द सेम थिंग वी कैन डू इन द पोस्टल डिपार्टमेंट ऑल्सो. लेकिन बहुत लोग जानते नहीं, क्योंकि हमारे जो सिटी में, हम सूरत सिटी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे हम इतना पोस्ट ऑफिस को हम ज़्यादा जानते नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे बैंक अवेलेबिलिटी है. बट इफ यू गो टू विलेज एरिया, तब आप ध्यान देना, लोग ज्यादातर पोस्ट ऑफिस के पास जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको अच्छा सर्विस मिलता है ना. चलो देखते हैं. सेविंग सर्विसेज. देखो, सेविंग ये बहुत जरूरी चीज है. सेविंग सर्विसेज बोलते हैं ना, 10 रुपया कमाते हो तो उसमें से आपको कम से कम 5 रुपए आपको सेव करना चाहिए. चलो देखते हैं. पोस्टल सर्विसेज जस्ट लाइक बैंक. देखो क्लियर लिखा है, पोस्टल सर्विसेज जस्ट लाइक बैंक provides various type of saving schemes. Services like saving account, 5-year recurring deposit, हर महीने पैसे जमा करो और 5 साल के बाद वो पैसे आपको मिल सकते हैं. 5-year recurring deposit. टर्म डिपॉजिट, टर्म का मतलब पैसे एक भी बार जमा करना है और जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तब हम उसको पैसे मिलेंगे हमको. मंथली इनकम स्कीम, जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनके पास काम नहीं होता है, तो एक अमाउंट रख देते हैं बैंक में और उसमें से हमें पैसा मिलता है. सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, राइट, बहुत अच्छा है. राइट, आप भी जब बड़े हो जाएंगे तो अपने पापा मम्मी के नाम पे ये रखना, अच्छा इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट. 15 इयर्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अपने नाम पे खोल सकता हूँ, लेकिन 15 साल के बाद ही मुझे वो पैसा मिलेगा. फिर है किसान विकास पत्र. एक्चुअली पत्र का मतलब होता है सर्टिफिकेट. अब इसमें क्या होता है, किसान विकास पत्र में आप पैसे डाल दोगे तो आपको 10 साल के बाद, अभी तो 10 साल हो गया, पहले 5 साल था, 10 साल के बाद पैसे डबल हो जाते हैं. नाउ सुकन्या समृद्धि योजना, अब ये हमारे मोदी सरकार लेकर आए हैं, मोदी गवर्नमेंट हैज कम विद दिस स्कीम. अब इसके अंदर सिर्फ गर्ल्स, जिन्होंने गर्ल्स के लिए ये पॉलिसी खड़ा किया हुआ, राइट. तो बहुत सारे स्कीम है, हम एक के बारे में सीखते जाएंगे क्या है. शुरू करते हैं सेविंग सर्विसेज. तो क्या लिखा है, पोस्टल डिपार्टमेंट जस्ट लाइक, क्लियर लिखा है, पोस्टल डिपार्टमेंट जस्ट लाइक बैंक्स, पोस्टल डिपार्टमेंट जस्ट लाइक बैंक्स प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सेविंग स्कीम. अब ऐसा ही पूछ सकता है एग्जाम में, व्हाट आर द सेविंग स्कीम्स गिवन बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट. तो आपको लिखना है विच आर द फ्रेंड्स, 5-year रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, क्या है पहला वाला, 5-year रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, टर्म डिपॉजिट स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम. नेट पे जाओगे ना तो भी आपको ऐसा मिलेगा. 15-year पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम,
5 और 10 ईयर, 5-10 मत लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो, किसान विकास पत्र स्कीम एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट, राइट, योजना भी हम बोल सकते हैं। तो व्हाट आर द सेविंग सर्विसेज फ्रेंड? What are the saving services given by the postal department? 5-year recurring deposit scheme, term deposit scheme, monthly income scheme, provident fund scheme, public provident fund scheme, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, सब चीज में आपको पैसे मिल सकते हैं। Just like bank, post office saving account can also be opened for which checkbook is given. And now there is a facility of ATM card too. ये सब हमारे लिए नया है क्योंकि अभी हमने ये सब देखा नहीं ATM कार्ड सब, लेकिन है, रूरल बैंक में ये सब अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और हमने कहाँ तक देखा, हमने आज क्या क्या पढ़ा हमने वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने पढ़ा कि पोस्टल डिपार्टमेंट क्या क्या सर्विस देती है। उसके अंदर हमने पढ़ा जनरल पोस्ट, याद है। दूसरा हमने पढ़ा रजिस्टर्ड पोस्ट। फिर क्या पढ़ा? पार्सल सर्विसेज। उसके अंदर हमने पढ़ा वीपीपी का पोस्ट पढ़ा हमने। और उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा? पार्सल सर्विस, स्पीड पोस्ट, यस। और उसके बाद हमने पढ़ा एक्सप्रेस पार्सल। एंड लास्ट में हमने पढ़ा सेविंग सर्विस। ठीक है, एक बार रीड कर लो आप। मेन पॉइंट होता है कि आप इसे रीड करो और इसका रिटर्न प्रैक्टिस करो। जब तक आप इसको रिटर्न नहीं करोगे, इफ यू डोंट राइट यू डोंट रिमेंबर। होगा क्या? इफ यू जस्ट रीड, भूल जाओगे। इफ यू राइट इट, इट विल बी 100% इन योर माइंड। अपने सेंस ऑर्गन्स उसको ले लेती है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो याद करो। बोलो कितने पोस्ट ऑफिस है, जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। 2 लाख। कितने साल होके आके? 150। सर्विसेज जनरल पोस्ट में क्या आता है? पोस्ट कार्ड, इनलाइन कवर। रजिस्टर्ड पोस्ट में पता है एक्नॉलेजमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। पार्सल सर्विस भी देती है, इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, बराबर। वीपीपी, वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट, फुल फॉर्म है। स्पीड पोस्ट आप दे सकते हो, राइट, स्पीड कर सकते हो, कल के कल ही आप पहुंचा सकते हो, लेकिन उसके पैसे ज्यादा लगेंगे। फिर क्या पढ़ा हमने? जस्ट 1 मिनट। एक्सप्रेस पार्सल, मैंने बोला मेडिसिन होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट, पेरिशेबल गुड्स, है ना, वो सब के लिए भी वी यूज दिस वन, जिसका भी काम जल्दी हो जाता है। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा सेविंग सर्विसेज। तो सेविंग में हमने क्या पढ़ा? सेविंग सर्विस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट। लाइक जैसे बैंक कैसे काम करती है वैसे 5 ईयर कौन से रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, बराबर। जैसे बैंक में ओपन होता है वैसे ही यहाँ पे भी ओपन होके हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट पीरियड में हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? रिकरिंग डिपॉजिट किसे कहते हैं। अभी जो ऊपर जो पढ़ा है ना हमने, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेंगे। रिकरिंग किसे कहते हैं, टर्म डिपॉजिट किसे कहते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, किसान विकास पत्र किसे कहते हैं, पीपीएफ किसे कहते हैं, पोस्टल इंश्योरेंस क्या होता है, मंथली इनकम स्कीम क्या होता है, मनी ऑर्डर का काम कैसे करना है, ये सब चीजें इसके अंदर। तो आई थिंक दैट के नेक्स्ट पीरियड आप बराबर थोड़ा इसे रीड करके बैठोगे, राइट। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने? बिजनेस सर्विस पार्ट 1 में इंश्योरेंस का डेफिनेशन पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा हमने, याद है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, राइट। और उसके बाद हमने ये पोस्टल सर्विस देखे। इंश्योरेंस का भी देखा हमने, याद है, जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। ओके, तो यहां तक हमने कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। होप आप इसका रिविजन करोगे। थैंक यू।